will be influenced by multiple perspectives that are presented before you. Another factor, free media. I understand बहुत से लोग इसको शायद ना लाइक करें, but free media. Yes, it is. Not just media, free media. Yes. Now, the freer the media is, it is likely that people will have access to more information, जी वैसे इसको ना जब हम फ्री कहते हैं तो फ्री फ्रॉम कंट्रोल्स एंड फ्री फ्रॉम बाइसेस दोनों चीजें आ जाती हैं उसके अंदर. सो if media is free, you will have access to more information, as a result of which you can make choices from those given options. The people will have multiple options to choose from. So जितनी ज़्यादा diversity of opinion होगा, जितनी ज़्यादा diversity of perspective होगा, then you can make smart choices out of it. But again, multiple options हों, लेकिन society educated ना हो, फिर मसला. because multiple choices तो मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बंदे को critical mind ही नहीं है. That would become problematic. So free media in the sense that media free ho, unbiased ho, uncontrolled ho. In that case, people will give every perspective on an issue. They will give the other side of the story, and they can make a contrast, a comparison, and hold a sound public opinion. वो आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, but people know everything and then made a choice for themselves. That is likely to lead them to the closer to the truth as well. तो वो उससे उनका ओपिनियन जो है वो साउंड हो जाएगा, वो रियलिटी के ज़्यादा करीब होना शुरू हो जाएगा. What Trump's takes on media, anti free media, what he's saying is that media is biased, crooked media उसका लफ्ज़ यूज करता है वो. So that he's not anti media, by the way, he's anti biased media. Yes, these are true because media is a mass media, तो उसी में freedom of expression आ जाता है. This is also important factor. फिर एक और बड़ा important factor है उसका public opinion के sound का. No, no, it is not. Media's role is negative mostly. देखिए पाकिस्तान को अगेन एग्जांपल लेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकते हैं. बट अगर मीडिया का रोल नेगेटिव ना है, समझिए मीडिया नहीं हमें बताया कि मीडिया का रोल नेगेटिव है. मीडिया ना होता तो आपको कैसे पता होता कि उसका रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आई गेस लेट्स गिव इट अ क्रेडिट दैट इट हैज एम्पावर्ड यू, इट हैज enabled you to think that media is wrong, at least. Let's give this credit to media. Okay. True. दुनिया भर में सब अकाउंटेबल है जी. एग्जैक्टली. इफ यू थिंक मीडिया इज बैड, व्हाई यू वॉच इट? सिंपली दैट्स योर अकाउंटेबिलिटी टू देम. एनीवे, नेक्स्ट फैक्टर. चार हमने शायद डिस्कस किए अभी तक. द फिफ्थ फैक्टर that makes sound public opinion is there are 5 of them: education, media, tolerance, social harmony भी कह लें. economic security ज़्यादा important है. economic security ज़्यादा important है. yes, economic security. क्यों economic security? This is very important one. This is very important one.
Economic security isliye because if people have basic economic needs met, if people have basic economic needs met, in that case, they are likely to start taking interest in state affairs. And they shall not easily be manipulated. So true, Zishan. This is absolutely right. And they, एक तो जिनके घर में those who have economic security, उनको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा होगा, they will have some time to, and they will have some energy to focus on the state affairs. Secondly, their opinion cannot be manipulated. उनके opinion को manipulate करना मुश्किल होना शुरू हो जाएगा. Yes, Amar, true. So, जी सुनील, एग्जैक्टली बिरयानी वाली बातें आ जाएंगी जी. चल रहे हैं जवेरिया, कोई बात नहीं. बिरयानी पे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया. अब मदीना की रियासत पे भी तो लोग बिके हैं ना. वो भी तो एक लोगों को डेमोगोगी दिखाई गई वहां पे भी जाके. बट ठीक है, बिरयानी से लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन मदीना की रियासत के नाम पे जो हमारे साथ हुआ वो भी तो हमारे हाथ भी कुछ नहीं आया. और एनीवे, so I guess biryani was a better bargain from people's side. Just kidding. Anyway, just kidding. But coming back to this point, so economic security essential है, because आपका if you have empty stomach, then obviously you will get manipulated. आप manipulation आपकी हो जाएगी. और नहीं, Panaga, Aisha, I have been to that place, honestly speaking. Panaga was the best thing ever done by Imran Khan, no doubt. मेरा Facebook account अगर कोई देखे तो मैंने even he opened it the first time, so I did praise him a lot on that. Absolutely, no doubt. But one good is separate and the other things are separate. But no doubt, this is the best thing that happened in the last few years in Pakistan. Anyway, coming back to this point. So economic security, इसी Panaga से link है. Obviously बात है, if you are economically, if your basic economic needs are met, and then obviously बात है, you can take interest in state affairs, you can form opinions about them, and obviously आपका जो ओपिनियन है वो मैनिपुलेट भी नहीं होता. अच्छा, ओपिनियन रखने वाली बात छोड़ दी. अगर आप कभी टीवी पे देखें, जब पब्लिक से बात की जाती है इलेक्शन के दिनों में और उनसे पूछा जाता है कि जी आप किसको वोट डालेंगे, तो आगे से हर बंदे का होता है जी हम उसी को वोट डालेंगे जो हमें खाने के लिए कुछ करेगा, मेरे रोजगार के लिए कुछ करेगा. सो पीपल हैव इन माइंड सम इकोनॉमिक नीड्स. अगर इकोनॉमिक नीड्स फिलफिल होंगी तो फिर कुछ स्टेट अफेयर्स के बारे में वो सोच सकते हैं. दिस इज व्हाई इट्स एब्सोल्यूट एसेंशियल. Okay, so I guess true, absolutely जी. Okay, what about extension of survival? Obviously not. यानी 1 hour में बनती है. मदीना की रियासत इतनी जल्दी नहीं बन पाती. सुनीला जी, सुनीला बिल्कुल ठीक कह रही हैं. So that's why I think he shouldn't have been claiming कि वो मदीना की रियासत बना देंगे 90 days के अंदर. He claimed it himself. We didn't ask for him. But anyway, obviously बात है. I so agree. States को change होने में time लगता है. It's already an evolutionary point. No doubt on this one. But we need to see some winds of change in that direction that we have seen very few. Anyway, coming back to the political debate है, political science है, ऐसे ही चलता है. ये मेन हो गए जी. लास्ट पॉइंट पे जाते हैं इसके ऊपर. लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, जो मेन पॉइंट है वो है टूल्स टू मेजर. टूल्स मेजर करें करने के लिए क्या होते हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है, व्हाट इज ओपिनियन ऑफ द मैसेज, तो वो क्या है. मुझे 6-7 का तो नहीं आइडिया बेसिकली, बट आई डू नो अबाउट सम ऑफ द टूल्स. अगर कुछ टूल्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल एक मेजर जो टूल है उसको मेजर करने का, पब्लिक ओपिनियन को,
वो है इलेक्शंस। पॉइंट नंबर 6 है, आई डोंट नो दीरा व्हाट इज पॉइंट नंबर 6, जो भी है। नहीं नहीं, ये पॉइंट नंबर 6। अब हम नेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग पे जा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था पहले, पहले मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो था डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने पब्लिक ओपिनियन के अंदर उसकी इंस्टीट्यूशंस देखे थे, फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा था उसके फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस साउंड पब्लिक ओपिनियन, और अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन मैयर कैसे होता है, हाउ टू मैयर पब्लिक ओपिनियन, उसकी मेजरमेंट के, उसके ऊपर बात करें, टूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मैयर पब्लिक ओपिनियन। इलेक्शंस एक सबसे पहला है जी, सॉर्ट ऑफ कैन माइनॉरिटी ओपिनियन बी डोमिनेंट। अस्टैन, थैंक यू फॉर asking a वेरी गुड क्वेश्चन। डोमिनेंट का लफ्ज मतलब है यस इट इज। अस्टैन, डिक्टेटरशिप यही होती हैं, अरिस्टोक्रेसी वही होती है जहां पे कुछ लोग जो समझते हैं दे स्टार्ट इम्पोजिंग ऑन एवरीबॉडी एल्स, दैट्स द पॉइंट। नाउ टूल्स क्या है, बट स्टैंड हो सकता है बहुत से चाइना कम्युनिस्ट पार्टी एग्जांपल है, आपको डिक्टेटरशिप जितनी भी है वहां पे असद रिजीम की एग्जांपल है, एब्सोल्युटली फातिमा, दैट्स ट्रू। ईरान के अंदर एक क्लर्जी है जो कि डोमिनेट करती है, उसके व्यूज हैं सारा, तो इस तरह से हो जाता है, दैट्स ट्रू। और बाय द वे अगर आपसे मैं पूछूं, ये स्टैंड का वाला पॉइंट है, किसी पॉलिटिकल थिंकर ने भी कहा था, आपको मैं अगर याद हो, कि माइनॉरिटीज ओपिनियन कैन बी वैलिड एज वेल, किसने कहा था? रूसो, एग्जैक्टली, उसकी जनरल विल, दैट विल मे बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी और दैट विल कैन बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। थैंक यू कमरान फॉर द आंसर। एनीवे, लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स टूल्स। पहला का मैंने कहा इलेक्शंस। इलेक्शन इज वन बैरोमीटर through which we can measure public opinion. It's one of the barometers through which we can measure public opinion. Election results show the inclination of masses towards one party or another party, and it also shows people's liking for a particular political perspective. और आप यहां पे लाजमी लिखेंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल recent US elections and Democrats' victory have proven that American public is no longer supportive of the right-wing politics in US. Indian society, on the other hand, has seen an opposite shift in 2019 when they re-elected BJP. मैंने अमेरिका में कहा अब्दुलरहमान, दैट वहां बाइडेन की सपोर्ट ये शो करती है दैट सोसाइटी इज अपोजिट टू, इट इज अपोजिंग द राइट विंग पॉलिटिक्स एंड इट इज सपोर्टिव ऑफ द लिबरल पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। लेकिन इंडिया के अंदर दिस एग्जैक्टली अपोजिट, वहां द इलेक्शंस प्रूव दैट सोसाइटी इज गेटिंग कंजर्वेटिव, सोसाइटी इज क्लोजिंग टुवर्ड्स राइट विंग आइडियाज। That's true, Fatma. But let's see who won the election ultimately. We are just talking about the public opinion, Adila, कि public opinion कैसे measure किया जाता है, और measure करने के लिए elections एक तरीका है। तो elections हमें बताते हैं कि अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मुल्क के अंदर अगर इलेक्शन में एक पार्टी जीतती है तो उसका जो मैनिफेस्टो होगा, इसका मतलब लोगों के ख्याल में वो इश्यूज इंपॉर्टेंट है।
लोगों का एक बेंट ऑफ माइंड शो करेगा थोड़ा। जिशान, पाकिस्तान इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हम, आप और मैं एमएनए के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस डालते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के वोट हम डालते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम वोट नहीं डालते, लेकिन हम पार्टीज के लिए, तो किस पार्टी की मेजॉरिटी है तो ऑब्वियसली बात है वो शो करता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जी एग्जैक्टली फातिमा, दैट्स ट्रू सर। जैसे पाकिस्तान में 2002 में एमएमए जीती थी, तो एक ट्रेंड हुआ था कि हमारी सोसाइटी जो है वो रिलीजन की तरफ मूव कर रही है। सो इस तरह के वोटर बिहेवियर जो है उससे हमें आइडिया हो जाता है, वोटर बिहेवियर, वोटर पैटर्न्स इसको हम कहते हैं, अब वो डेवलप हो जाते हैं, वहां पे अंडरस्टैंड हो जाते हैं। दूसरा मेजर है जी रेफरेंडम। सॉरी, अरम अरम को चला गया रेफरेंडम। रेफरेंडम इज अनदर मेजर फैक्टर। Referendum is another tool through which the opinion of masses can be measured. True. Yes, Fad, it is a reactionary party too. Sorry, Amna, yes, it is. Mostly that's true, Zishan. Mostly true, but not always true. But yes, mostly true. Pakistan की केस में. अच्छा, referendum पे जाते हैं. The referendum is second major tool to measure public opinion. Different states, their laws and constitutions, different states, their laws and constitutions provide for referendum as a means to measure the public opinion The classical example is Brexit. Classical example is Brexit. In some states, the legal and constitutional amendments, in some states, legal and constitutional amendments are also conditional to referendums, like France, Turkey, etc. यस फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। NAQVI का बनना पाकिस्तान के साथ शामिल होना 1947 के अंदर भी इट वाज बेस्ड ऑन रेफरेंडम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आमना टाइप कर रही हैं, अभ्यास वहाँ पे कर रही हैं. नेक्स्ट टूल इज, अब मैं टाइप नहीं करूंगा, इट इज प्लेबिसाइट. मेजर डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड इलेक्शंस. मैं पहले अतला इसको करा दूं, फिर आगे आता हूं. कैन वी गिव जी एग्जांपल? पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं देनी, आपने बाहर की एग्जांपल देनी है, यूके की देनी है, फ्रांस, टर्की की देनी है. नेक्स्ट इज प्लेबिसाइट. नहीं अली, मैंने आपको शुरू में कह दिया था पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं देनी किसी को. प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट इज just like referendum, and it is another tool through which public opinion is measured or calculated or counted. Obviously इसकी example आप कश्मीर की देंगे, where UN has proposed plebiscite in Kashmir to know the public opinion
to know the public opinion regarding joining Pakistan or India. Now let me explain this point कि ये जो डिफरेंस क्या है जो तीन ऊपर आए इलेक्शन में और रेफरेंडम में. देखें, इलेक्शन में you elect a candidate. In referendum you answer a question based on what is your opinion. You do not choose somebody in referendum. In elections you choose somebody. Difference. और भी बहुत है. In elections you are not asked a question, you are asked to vote. In referendum you are asked to answer a question through your vote. तो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल होता है. अच्छा, दूसरी जो इलेक्शन जो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में फर्क है, रेफरेंडम इज हेल्ड ऑन मोस्टली लीगल issues related to national importance, legal importance, legal amendment, constitutional amendment. ये बेसिकली डिफरेंट उसके अंदर एग्जाम्पल है. जो प्लेबिसाइट है, ऑन द अदर हैंड, प्लेबिसाइट is more of knowing the public opinion and it is usually used to settle disputes between states. अच्छा, ये मेन डिफरेंस है जी. थैंक यू रिशा फॉर शेयरिंग जी. ये 2020 की बुक शेयर कर दी रिशा ने, यहाँ पे जिनको चाहिए. सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे दी. स्नैपचैट एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल प्लेबिसाइट सिमिलर टू कश्मीर. मेरे में नहीं है कोई और प्लेबिसाइट का, रेफरेंडम का है लेकिन प्लेबिसाइट का और नहीं है मेरे से. सो जी होता रहता है एग्जैक्टली कमान, बहुत से मुल्कों में होता है. ट्रू टर्की में हुआ है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर होता है रेफरेंडम. आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया. सो प्लेबिसाइट इज मोर लीगल, मोर नेशनल पॉलिटिकल नेचर का, और जो रेफरेंडम है इट इज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का. ये मेन इनके दरम्यान में डिफरेंस है. इज इट क्लियर? ओके. ओके, next is सर्वे. ये लिखती है, प्लीज आप लिख दीजिएगा सर्वे. अच्छा, सर्वे भी एक इंपॉर्टेंट टूल है टू measure public opinion. Surveys are conducted by researchers, think tanks, media, political parties, etc. The purpose of survey is usually to know the public opinion. अच्छा, सर्वे के अंदर फिर आपको पता है डिफरेंट चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल आपको पता है पॉपुलेशन होती है सर्वे के अंदर, सैम्पलिंग होती है. द रिजल्ट्स ऑफ सर्वे
the results of survey from a given population, results of survey from a given population and sample are then generalized on the entire society. They are generalized on the entire society. For example, the surveys before US election, showed a Democratic lead against the Republicans. But it is not necessary that surveys will always be accurate description of public opinion. Again, the example is US elections of 2016. So US हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक सक्सेस सर्वे थी इन एक्सप्रेसिंग द पब्लिक ओपिनियन और दूसरा यूएस के अंदर फेलियर के सर्वे समटाइम्स आर नॉट एक्यूरेट एज वेल. दोनों मेन पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे. इज इट क्लियर? ये मेन इनिशिएटिव्स हैं जी, ये मेन टूल्स हैं हवाले से. दिस इज ऑल अबाउट ओके. देन आई गेस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. Next up is again very important one. It's extremely important for you guys and so repetitive. Fascism, a very important one. इस पे सवाल बहुत दफा आया है, रिपीट हुआ है, मेरे पिछले 2 साल से आता है, कंटिन्यूसली आता है, पहले भी आता था. So this question again and again and again. But let us understand what is fascism that way. अच्छा, इस पे दो चीजें मेन, अभी इसको डेफिनेशन वगैरह तो हम अंडरस्टैंड करेंगे. इसके अंदर 2 पॉइंट देखेंगे. एक fascism causes, why fascism and how fascism developed. ये पीएमएस के अंदर भी उसका मेरा ख्याल है पीएमएस में भी है. यस. And second, principles of fascism. Causes of fascism, principles of fascism. Yes. But obviously, let us start with the definition और फिर हम जाएंगे causes पे. That's one of the factors. True, Abdul Wahab. True. What is fascism? Fascism is an Italian word which is derived from the word fascio. Fascio. This fascio means band, group. B-A-N-D, band, group. So fascism as an ideology was developed in Italy. Fascism as an ideology, B-A-N-D, band. It means band, group. इसी का एक पता नहीं म्यूजिकल बैंड होता है. अच्छा, it's an ideology that originated in Italy and then in Germany after World War I. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई इटली के अंदर और फिर बाद में गई जर्मनी के अंदर.
In Italy, it gave power to fascist party led by Benito Mussolini. Led by the fascist leader Benito Mussolini. While in Germany, it was adopted by the Nazi party led by Adolf Hitler. Mussolini and Hitler in Germany. इटली में पार्टी का नाम फाशिस्ट पार्टी, जर्मनी में नाम नाजी पार्टी, NAZI नाजी पार्टी, हिटलर था। ये बेसिकली इसकी उसवत है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। फाशिज्म है क्या? व्हाट इज फाशिज्म? इट्स अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। फाशिज्म इज an ultra-nationalist ideology. It's an ultra-nationalist ideology which is governed by which governs the state, through authoritative rule by the fascist party. Authoritative rule by the fascist party. अब जरा एक जुमले में समझ लीजिएगा, लिखिएगा नहीं। अथॉरिटेटिव रूल से क्या मतलब है? वो रूल जिसमें पावर शेयरिंग नहीं होती, एकमुलेशन ऑफ पावर होती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है। यस, सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये एक डिस्पोटिक रूल होता है। एग्जैक्टली। मोनार्किक नहीं कहेंगे, डिस्पोटिक कह देंगे, अथॉरिटेटिव कह लेंगे, डिक्टेटरशिप कह लेंगे, सॉर्ट ऑफ। तो वो उस तरह की स्टेट है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये स्टेट एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, मतलब है फंडामेंटली फैशिज्म इज नेशनलिज्म। इट्स अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनलिस्ट से मतलब ये है दैट इट इज स्टेट सेंट्रिक, but it is willing to sacrifice anything and everything for state interests. G, Sunila, absolutely. Extreme nationalism. It's kind of xenophobic. Perverted nationalism. Okay. But and he is nationalist too, Abbas. If I have an ideology of nationalism, ultranationalism, Abbas, then हम उसको fascist कह सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट लेट अस डिग डीप। अब जरा मजीद पढ़ते हैं, इसके देखते हैं कि कैसे बनी ये, फिर प्रिंसिपल देखेंगे, फिर शायद करंट वर्ल्ड में अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आपको किसको देनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन और द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ फैशिज्म। अच्छा, देयर आर 3। इसमें क्वेश्चन एक दो तरह से ही आता है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फाशिज्म क्या है, इसकी ओरिजिन और इसके प्रिंसिपल देखते हैं, इस तरह से आ जाता है। या एक दफा सवाल आया था कि जी फाशिज्म ओरिजिनेटेड इन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इन जर्मनी एंड इटली। बात वही है सॉर्ट ऑफ।
दो पॉइंट लिखेंगे आप इसके अंदर, इसकी ओरिजिन क्या है, कौन से फैक्टर्स की वजह से इसका ओरिजिन हुआ, और इसकी आइडियोलॉजी है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये दो चीजें आती हैं. Extreme nationalism in what sense, Miraj? It means that for the sake of state, that fascist party or fascist rule can go to any extent. State centric, exactly. State के इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. That's the kind of extreme nationalism. Good or bad? Chauvinism. True. Okay. Okay. Next पे चलते हैं. Origin. Origin क्या है इसकी? Causes क्या है? मेरी इसमें कहाँ से आ गई? Origin. Causes. अच्छा, this is very very important one. Origin cause पे जाते हैं. Okay. Now, तीन मेजर काजेस हैं या तीन मेजर ओरिजिन है इसकी फाशिज्म की. या थ्री मेन फैक्टर्स और थ्री मेन काजेस फॉर द राइज और द ओरिजिन ऑफ द फैशिज्म. सबसे पहले कहां डेवलप हुआ था? वेयर इज इट डेवलप फर्स्ट? अगर आप में से कोई बता सके यहां पे नीचे. इटली के अंदर. यस. नाउ लेट्स सी. तीन बड़े फैक्टर्स हैं. मैं पहले वो फैक्टर्स लिखवा दूं, फिर हर एक को एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट फैक्टर is the sense of betrayal in Italy. Sense of betrayal in Italy after World War I. ये पहला पॉइंट. अब थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है. कुछ लोगों ने शायद यूरोपियन हिस्ट्री वालों ने या अमेरिकन हिस्ट्री वालों ने पढ़ा होगा, बट जिनको नहीं आइडिया अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज. अच्छा, मैं जरा यहाँ पे कुछ चीजें टाइप भी करूंगा. वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोप में दो अलायंस बने थे. देयर वर टू अलायंसेस that were developed in Europe before World War I. First one is the Triple Alliance that consisted of the Italy, Germany, and Austro-Hungary. Triple Alliance was established between three major states, Italy, Germany, and Austro-Hungary in 1882. तीनों स्टेट का मिलकर एक अलायंस बना था. इसके काउंटर में एक दूसरा अलायंस बना which is called Triple Entente, and Triple Entente were states जिनके अंदर आप तीन मेजर हैं, यूके, यूएस, सॉरी यूके, फ्रांस एंड रशिया. जी, ये पहला काज है, सेंस ऑफ बेट्रियल इन इटली. सेंस ऑफ बेट्रियल इन इटली. तो सेंस ऑफ बेट्रियल के लिए मैंने कहा पहला जो काज है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैंने कहा वर्ल्ड वॉर वन से पहले दो अलायंस बने, ट्रिपल अलायंस और दूसरा बना ट्रिपल एंथा. ट्रिपल अलायंस में था इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रो हंगरी. ट्रिपल एंथा में है यूके, फ्रांस, रशिया. ट्रिपल एंथा बना 1907 में. ट्रिपल अलायंस बना था 1882 में. ट्रिपल एंथा बना 1907 में. राइवल अलायंसेस हैं, होस्टाइल टू ईच अदर, और फिर इन्हीं अलायंसेस में वॉर शुरू हुई 1914 में. In 1914, these alliances went to war with each other. That led to what we call World War I. जब ये वॉर शुरू हुई, वॉर के दौरान इन अलायंसेस का नाम चेंज है. जो ट्रिपल अलायंस था, दे वर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स, सॉरी यस सेंट्रल पावर्स. ट्रिपल अलायंस की जो स्टेट्स हैं वो कहलाती हैं सेंट्रल पावर्स, और जो ट्रिपल एंटा की स्टेट हैं दे आर कॉल्ड एलायंस.
वॉर के दौरान। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करूं तो अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। वर्ल्ड वॉर 1 में जब शुरू हुई तो ट्रिपल अलायंस का नाम बन गया सेंट्रल पावर्स, और जो दूसरी हैं ट्रिपल एंटावर स्टेट्स हैं उनका नाम पड़ गया एलाइज ऐसे। तो अब मैं लफ्ज यूज करूंगा एलाइज एंड सेंट्रल पावर्स। एलाइज में यूके, फ्रांस, रशिया, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि जब वॉर शुरू हुई, when the war started, Italy did not join on its allies side. Italy never participated in the war initially. अच्छा, क्यों नहीं शामिल हुआ? Because Italy hoped that Austro-Hungary will be defeated and some of its territories would automatically fall under the Italian control. अपने ही एलायंस के बारे में उसका ख्याल था कि जब उसको शिकस्त हो जाएगी, वीक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसकी टेरिटरी कुछ मैं ले लूंगा। दे होप फॉर दैट, but it also feared that Germany and Austro-Hungary might threaten it. क्या थ्रेटन कर सकते हैं उसको? So 1915 में, in 1915, Italy signed a secret pact. In 1915, जब वार का अगला साल था, Italy signed a secret pact with Britain, guaranteeing that it will not join the war from the side of Germany and Austro-Hungary. 1915 में इटली ने एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटेन के साथ, सीक्रेट एग्रीमेंट था जो बाद में पब्लिक हुआ, दैट ये जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी की तरफ से नहीं लड़ेगा। इन 1916 अगेन उम्मीद वही थी, इट आल्सो होप्ड कि मैं ब्रिटेन को जब ये प्रॉमिस कर दूंगा तो जब ब्रिटेन जीत जाएगा जंग तो मेरे हवाले वो टेरिटरीज कर देंगे। इन 1916 इटली jumped into the war against Germany and Austro-Hungary. 1916 में इटली ने जर्मनी पे हमला कर दिया, ऑस्ट्रो हंगरी पे हमला कर दिया। अगेन वही लालच है, इट हैड दैट थिंग इन माइंड दैट इट वुड गेन टेरिटरीज ओवर देयर। However, after the end of the war, Allies won and Central Powers were defeated. Allies जीत के थे, Central Powers हार गई थी। And then different treaties were signed. Different treaties were signed. दो मेन ट्रीटीज हैं अगर आप जानते हो। वन वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, Treaty of Versailles, and second is Treaty of Sevres. And second is Treaty of Sevres, Sevres, or Treaty of Versailles. In both treaties, Italy was not given the territories that it expected. Italy didn't get what it expected, and in fact, Italy was not invited to negotiate those treaties. Allies की जब मीटिंग होती थी, इटली को नहीं बुलाया उन्होंने। It was not invited. ना टेरिटरीज दी, ना बुलाया। ट्रीटी ऑफ लुसेन भी हुई थी लेकिन वो बहुत बाद में हुई थी, वो 1924 में हुई थी। ये मैं शुरू की ट्रीटी की बात करूं। जब ट्रीटी ऑफ लुसेन हुई थी उस वक्त तक इटली के अंदर फाशिज्म आ चुका था। अच्छा, सो इन दो ट्रीटीज में इटली को ना इनवाइट किया गया, ना वो टेरिटरीज दी गई
that Italy hoped that it will get at the end of the war. अच्छा, Italy felt betrayal. सीधा एक मिनट कर लूं फिर आपके जवाब पे आ रहा हूं सवाल पर. Italy felt betrayed. Italy felt that it had done so much for allies that it has not been acknowledged and it has not been properly rewarded. In fact, Italy felt humiliated. अगर एक स्टेट ह्यूमिलिएशन फील करेगी तो ऑब्वियस सी बात है नेशनलिस्ट विल राइज. Benito Mussolini as a nationalist, Benito Mussolini as a patriotic nationalist have used this public sentiment. Benito Mussolini as a strong nationalist and patriotic used this sentiment among Italians to gain popularity and ultimately overthrow the government to establish his fascist party's rule. As a nationalist, he exploited the public sentiments, he used their sentiments to gain popularity and used that public support to occupy power. So he did not came through elections, he came through occupation sort of. So agar, for example, Italy ki betrayal na hota, Mussolini would not have been able to garner support from the public. This became one of the major factors why Mussolini's fascism rose in Italy. Please tell me, is it clear? Not exactly आसान, because असबिया में तो अपनी ट्राइब से होती है, यहाँ पे अपनी कौम से, मुल्क से, कंट्री से. अच्छा, सुनिए का सवाल था, then why 3 of them called central powers? No, 3 of them, they never, I didn't use the word central powers. मैंने इसमें ये कहा था कि वर्ल्ड वार से पहले they were called triple alliance. वर्ल्ड वार जब शुरू हुई तो उसमें इटली नहीं था. So the central powers included Germany, Austro-Hungary and Ottoman Empire. ये 3 जो हैं वो मुल्क थे उसके अंदर. दो ट्रीटीज कौन सी हैं जी? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड ट्रीटी ऑफ सीवर्स. लास्ट बात रिपीट कीजिएगा. मैंने कहा जो मुसोलिनी है, ही एक्सप्लॉइटेड द पब्लिक सेंटिमेंट एंड यूज्ड इट टू गेन हिज ओन पावर इन इटली. ऑटोमन एम्पायर का रोल किधर गया? ऑटोमन एम्पायर का रोल नहीं है जी, ऑटोमन एम्पायर का रोल ऐसे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट. अली नहीं, उस स्पेलिंग को समझ गया. SEVRES सीवर्स, फ्रांस के अंदर है, पेरिस के करीब. इटली ने खुद भी तो बेट्रे किया जर्मनी को. It didn't betray it. It didn't betray it. It didn't promise that it will fight every German war. They never promised that. चलें, इसको मैं और कहता हूँ, अपनी की हुई बुराई बुराई थोड़ी लगती है, सिंपल लफ्ज़ में. ओके, लेट्स गो जी, सेकंड फैक्टर देखते हैं. सेकंड फैक्टर, second major factor that led to the rise of fascism is, मैंने लिख दिया सामान नीचे, Versailles and Sievers. अच्छा, the second major is the reaction to rising threat of socialism in Italy. Thank you, Amna, for sharing. The reaction to rising threat of socialism in Italy. अच्छा, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये मेरे लिए आसान इसलिए हो जाएगा पढ़ाना, 5 मिनट में मैं आपको खत्म करूंगा, 2-3 मिनट में.
बिकॉज आपको इल्म है, हमने सोशलिज्म पढ़ा हुआ है, कम्युनिज्म पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो कार्ल मार्क्स का। प्लीज जल्दी से बताएं, यू रिकॉल दैट, थोड़ा सा आइडिया आपको। जी, दास कैपिटल, ट्रू ट्रू। अच्छा, जल्दी से एक और चीज बताइएगा। जब हमने वो डिस्कस किया था तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बड़ा सोच के बताइएगा, इज कम्युनिज्म supports nationalism or it opposes it? सपोर्ट वाले अपना दायां कान पकड़ें सारे और अपनी सेल्फी लें, ताकि आप क्या मतलब दिन दिखा सकें अपने आप को। ओके, अपोज करता है जी, कैसे अपोज करता है? हाउ हाउ इट अपोजेज इट, लेट मी एक्सप्लेन इट। अच्छा, देखिए, अब मेरा आपसे सवाल जरा आसान है। सुपर एग्जैक्टली अवैस, स्टेट सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है और सुपर स्ट्रक्चर बनाता है ओनर। स्टेट इज पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लॉयटेटिव है। एंड कार्ल मार्क्स वांटेड टू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। जब ओनरशिप खत्म हो जाएगी तो सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। ऐसा ही था, अगर आपको अब याद आ गया हो सबको तो। स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है। यस आयशा, ट्रू। सो द पॉइंट इज, अब कान पकड़ना बनता है मेरे ख्याल में आप लोगों का। सो द पॉइंट इज, वो तो यूनिवर्सलिज्म की बात करता है, वो तो ग्लोबलिज्म की बात करता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियस ही बात है स्टेट होगी, जो सोशलिज्म का बात की गई एक लिमिटेड टाइम के लिए। बट जब हर स्टेट के अंदर सोशलिज्म हर स्टेट के अंदर होगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो ग्लोबल कम्युनिज्म आ जाएगा, जहां स्टेट्स नहीं होंगी, ग्लोबल कम्यून बन जाएगी। एग्जैक्टली कामराज, एब्सोल्युटली। सो द पॉइंट इज, अब मेसोलिनी है नेशनलिस्ट। अब सुनिए प्लीज, मेसोलिनी की आइडिया है, स्ट्रॉन्ग आइडिया है, अब वो है नेशनलिज्म का। अब रशिया के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है 1917 में। अब यहां पे जरा फॉर्मल में शुरू करने लगा हूं, अब पहले सिर्फ था, अब करूं। लेट मी, इसी पे चल रहा हूं। इन 1917 the Bolshevik or communist revolution occurred in Russia। Bolshevik के स्पेलिंग ऊपर फाद ने लिखे हैं जी। जी, और हम ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, 1917 में आता है Bolshevik or communist revolution in Russia, and then Lenin announces that he will spread the socialist revolution in every state around the world. Lenin announced that he will spread the message of Karl Marx around the world. Socialists will overthrow the governments, and when socialist revolution will come in all states, then they will abandon the entire concept of ownership and therefore superstructure. ये चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये सारी चीजें। स्टेट में आएगा, फिर पूरी दुनिया में फैलेगा और ग्लोबल स्टेट्स खत्म हो जाएंगी, अबॉलिश हो जाएंगी। दिस इज व्हाट लेनिन वांटेड टू डू। तो लेनिन ने क्या किया? ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग socialists and communist ideologies around the world. But the starting point was Europe. यूरोप से स्टार्ट किया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड करना शुरू की यूरोप के अंदर। एंड इनिशियली इनफैक्ट Mussolini joined the Socialist Party. Mussolini भी Socialist Party ज्वाइन की, but soon he realized that this ideology is anti-nationalist.
So he initially supported Socialist Party, he joined it, but soon he realized that this Socialist Party and this socialism as such is anti-nationalism. Therefore, he left it, and he feared that growing power of socialist parties in Italy, backed by Soviet Union, initially Russia था, फिर 1924 में Soviet Union बन गया. These socialist parties, growing power of socialist parties, backed by stronger Russia and Soviet Union, poses a threat to Italy as a state. जी और हम ऐसा ही है, ट्रू. तो उसको लगा कि अगर ये पावर में हो गए, ये स्ट्रांग हो गए सोशलिस्ट, ये तो पेट्रियटिज्म खत्म कर देंगे, ये तो इटली का जो नेशनलिज्म है, इटली का जो नेशनहुड है, उसको चैलेंज करेंगे, बिकॉज वो तो ग्लोबल चाहते हैं. Therefore, Mussolini started mass campaigns. Mussolini started mass campaigns against communism, and he developed a strong nationalist party. He developed a strong nationalist party to counter rising threat of communism in Italy. In other words, Mussolini's fascism was primarily anti-communist ideology. वैसे अगर आप में से कुछ लोग जानते हो, पाकिस्तान के अंदर भी और जनरली भी मार्क्सिस्ट लोग आज भी ये कहते हैं that fascism was created by certain powers ताकि कम्युनिज्म को वीक किया जाए. ये अक्सर लोग कहते हैं वैसे, बाय द वे. बट एनीवे, आप यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे कि who created them, but somehow it is an ideology which is anti-communist, no doubt on this one. Is it clear? So he preached that idea to the people that their nationalism is being threatened, their national identity is being threatened, or that's a threat. मैंने कहा जी अक्सर हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो फाशिज्म है, जो एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जानबूझ के क्रिएट की गई बाय इंपीरियलिस्ट पावर्स. यूके में, अमेरिका ने इन्होंने जानबूझ के क्रिएट की थी. मशीनी की नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ वेस्ट. सो फाशिज्म एक आइडियोलॉजी है, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट. ओके. जी, ट्रू ट्रू. It was the first. Anyway, सब मैं इसको शॉर्टली रिपीट करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में. बिकॉज कम्युनिज्म इज अ ग्लोबल आइडियोलॉजी, Mussolini is a nationalist, so he considered rising communism, rise in communist parties in Italy and Europe in general, as a threat to the nationalist identity of the state. ये बेसिकली उसने ख्याल किया, और उसको लगा कि ये अगर कम्युनिज्म आ जाएगा, ये गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लें, then they will destroy the national character of Italy. So to protect the nationalism of Italy, he developed fascism, which is primarily an anti-communist ideology. So as a reaction to rising communism, be developed. Third and last factor that gave birth to fascism is the weak and corrupt Italian government. Weak and corrupt Italian government.
अब इसकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे वैसे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल जी ऐसा ही है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं अगर अगर रशिया में कम्युनिज्म ना आता जो कि जोग्राफिकली करीब है इटली से तो शायद फाशिज्म डेवलप भी ना होता, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ट्रू। ओके ओके, इसमें ये क्वेश्चन मार्क मींस लास्ट पॉइंट है जी, वीक एंड करप्ट गवर्नमेंट, ये 1 मिनट में खत्म हो जाना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन यूरोप suffered huge economic losses. Italy also suffered economic losses. Italy also suffered economic losses, leading to extreme poverty and unemployment. Leading to extreme poverty and unemployment. While the government was inefficient, corrupt, corrupt, and the masses disliked the government. Masses disliked the government. जी एग्जैक्टली वही लिखा हुआ, ये भी कह लें आप, ऐसे कह लें, ये भी ऐसे कह लें, बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर भी कह सकते हैं। सो अच्छा मैं यहाँ पे छोटा सा बता दूं, जुमला जी बड़ा इंपॉर्टेंट। इटली एट दैट टाइम वाज अ पार्लियामेंट्री monarch. There was a parliament. सॉरी इटली के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. So monarch was the head of the state and under it was the parliament and parliament was headed by the prime minister. So people had that parliamentary government was considered to be corrupt and inefficient to resolve their economic crisis. So public distrust tha on the government. From Mussolini's perspective, this weak government, this corrupt government failed to not only provide basic necessities to the public, but it also had weakened the state power. That also weakened the state power. Therefore, he used this public mistrust on the government. To lead a movement against the sitting government, against the parliamentary system, with the help of his party members around Italy.
and he marched towards Rome. He marched towards Rome, besieged with the help of its party members, marched towards Rome, besieged the capital, removing the government, and he was appointed as the prime minister by the monarch in 1926. He was appointed as prime minister by the monarch in 1926. So मैंने अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ यूज किया जी इन तमाम फैक्टर्स की वजह से ही एक्चुअली मैनिपुलेटेड द पब्लिक, अपनी पार्टी को मैनिपुलेट किया, मार्च किया और बिसीज किया, और फिर जो क्राउन था, उन्होंने मनार्क था, उसने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया, इसको अपॉइंट कर दिया एज प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड देन ही स्टार्टेड ग्रैबिंग पावर्स, और फिर उसकी जो आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल तो हमारी क्लास शायद ना हो, परसों हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. आइडियोलॉजी का पढ़ेंगे, ये हम आइडियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं जी. मार्क्सिज्म कम्युनिज्म हम पढ़ चुके हुए हैं, ये आइडियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं फासिज्म के अंदर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इसके प्रिंसिपल्स हमने पढ़ने हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी विल बी सीइंग. कोई सवाल रह गया है तो नथिंग. अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह. आज के लिए बस 5 तारीख में खत्म नहीं हुई थी हमारी क्लास, 3 मिनट ऊपर हो गए. प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह. गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड बाय बाय.